हम लोगों का एक system change हो गया. Now we're at home, we're struggling for concentration, we're struggling to keep up, the enthusiasm that we had in schools, in universities. So इसलिए मैंने आज ये topic choose किया, and obviously because it's Maula Ali's birthday and he is Babul Ilm, he is the door of all knowledge, and so it is befitting that we speak about knowledge and education and high order thinking during his birthday as a means of celebrating productively. So the agenda for the talk today, ये presentation deck भी मैं share कर दूँगी आपसे बाद में, तो don't worry about taking notes or anything if anyone is. don't worry about that. तो आज की जो presentation है इसको हम 3 हिस्सों में divide करें, actually 4 हिस्सों में divide करेंगे, and we're going to first start by saying by discussing why or what is the importance of high order thinking or critical thinking in Islam. Second जो इसकी point है वो ये है कि why do we need high order thinking in education? तो हमें हम क्या ज़रूरत है कि हम critical thinking और education और पढ़ाई और knowledge सीख करें और उस पे अमल करें. And the final thing is, how do we incorporate high order thinking in our lives today? किस तरह से हम अपनी education और अपनी critical thinking को अपनी ज़िंदगी में line. Finally, somebody is playing with a mouse or something, but that's pretty smart, so keep doing it. Or finally, we'll have a question answer session in the middle, as I mentioned before. So what is high order thinking? Let's tackle that. जो भी CBSE में यहाँ पे है, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे CBSE के एग्जाम्स दिए हैं, तो high order thinking has been a new concept जो introduce करा गया था हमारे curriculum में, और it's a very valid concept, but it is obviously beyond CBSE, but we know the term from there. और इसका मतलब ये HOTS, exactly. So high order thinking is critically analyzing anything. So the first thing that I would like to ask you is, Allah ने एक variety of creatures बनाए. Variety, you have animals, you have inanimate objects, you have animate objects, you have jinn, you have people. The one thing जो हमें differentiate करती है, हमें किसे जो people with thought and rationality, जो इंसानों को और जिन्नों को और मखलूक से differentiate करती है, वो है the power of rational thought or high order thinking. So you understand the importance of this. Ratna is one thing. As हमारी education systems emphasized on memorizing and rote learning, तो वो देखा जाता है तो तोता भी रट के आपसे बात कर सकता है. We've seen parrots repeat what we teach them. So that is not high order thinking. High order thinking is critically analyzing and critically thinking about your goals, about subjects, about why you're doing it. Asking the right questions is what critical thinking is about. And अगर हम history देखें या current situation, politics में या global affairs आज देखें, तो एक इंसान को और एक community को oppress करने के लिए या दबाने के लिए सबसे पहली चीज जो attack होती है, वो उसकी critical thinking attack होती है. And अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए और अपने आप को grow कराने के लिए और अपने as a community grow करने के लिए, the one easiest solution, the one unified solution is engaging in the search for education and engaging with critical thinking. तो आज का जो दुनिया है, it's full of distractions. हमें Instagram, Facebook, social media और ये तमाम तरह के जो और इसमें apps और grow कर रही हैं, इसमें what are they doing? They're systematically attacking हमारी सोच, हमारी capacity to think, हमारा free time. ये हमें ऐसे distract करते हैं ताकि हम focus ना कर सकें कि मतलब on important things. Or when I say they, who do I mean? The power of this world, money and wealth is concentrated in 1% of the people. तो ये 1% चाहते हैं कि बाकी जो 99% लोग हैं वो ignorant रहें. और इसको हमारे इमाम, हमारे मौला कायनात जो साहिब नहजुल बलागा थे, who had the power of expression and eloquence, who is the center of all ilm and knowledge, said that the most complete gift of God
is a life based on knowledge. तो अल्लाह का मुकम्मल तरीन तोहफा किसी के लिए एक जिंदगी है जो नॉलेज और एजुकेशन पर बेस होती है. और it was a bigger saying to one of his sons, Imam Hassan से मौला अली गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी सी saying थी. I just picked out an excerpt of it, जिसमें मौला कहते हैं इमाम हसन से कि बेटा, the greatest wealth is wisdom. सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी पैसा और जायदाद जो है वो आपकी अक्ल है, your wisdom. And the greatest poverty is ignorance or stupidity. और मौला अली को अगर आप if I'm sure you all must have at some point read some parts of Nahjul Balagha, you must have come across sayings of Imam Ali. Imam Ali's letters to his governors, Imam Ali's sermons are filled with indications that he did not like ignorant people very much. He found कि ignorant लोगों से जितना दीन का नुकसान होता है उतना normal लोगों से नहीं होता. Because ignorant लोग जो होते हैं वो अपनी नासमझी में, अपनी ignorance में किसी का नुकसान कर देते हैं, voluntary or involuntary. तो it is our duty, it is a compulsion on every single Muslim, boy or girl, to seek knowledge, to seek wisdom. रसूल खुदा फरमाते हैं, रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मोमिन की, एक मुसलमान की विरासत है नॉलेज और इल्म. तो चाहे अगर आपसे खो जाए, लेट अस से, और वो खो गई है, हमारी कम्युनिटीज को देखें, हम कितने परसेंटेज हमारे जवान आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, कितने परसेंटेज हमारे जवान आज, ठीक है यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ कितने रहे, they're getting degrees, but how many are actually getting educated? So we're losing. ये हम अपनी जो विरासत है, जो हमारी एक वेल्थ है, हमारी जो ये एक जायदाद है, उसको हम खो रहे हैं. और रसूल कहते हैं कि अगर इससे आपको जाके अनबिलीवर्स से लेकर आना हो तो go and seek it from them. Go to universities where unbelievers are teaching you, मतलब गैर मुसलमान आपको पढ़ा रहे, वहां पे भी जाएं और सीख कर आए. Basically go to any lens to get training and education. सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल. अब let us say, stop and think कि ठीक है, this is all well and good, it differentiates us from animals, but what is the real reason for engaging in rational thought? जरूरत क्या है हमें कि हम इतना स्ट्रेस आउट करें, इतना पढ़ाई करें, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लें, स्पेशली आप आजकल when everybody is living a comfortable life. तो उसके लिए फिर you have to go back to the Quran and see what the Quran says about people who don't engage in critical thought. तो सूरह मुल्क की आयत जो मैंने अपने खुतबे में पढ़ी थी, सूरह मुल्क की आयत नंबर 10 is talking about a group of people जो फेंके जा रहे होंगे जहन्नम की आग में, और वो कहेंगे कि काश कि हमने सोचा होता, सुना होता और सोचा होता. So basically दो चीजें, हमने सुनी होती बात, किसकी बात, जो हमारे मैसेंजर्स हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं जिन चीजों में, उनकी हमने अगर बात सुनी होती और हमने रीजनिंग करी, हमने अपनी अकल यूज कर, कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु, मतलब अकल यूज करी होती. हमने अपनी खाली अकल यूज करना भी, हर जगह लॉजिक लगाना भी नहीं है. पहले हम एक्सपर्ट्स की बात सुनते और फिर अपनी लॉजिक लगाते, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको रीजन आउट करते, तो हम इस जहन्नम में ना डाले जा रहे. तो कुरान is warning us in different ways. काफी अल्लाह बार बार सवाल करता है कि क्या तुम सोचोगे, क्या तुम इस पे फिक्र करोगे, क्या तुम इस पे गौर करोगे. तो he is making us realize the importance of sitting down and thinking about concepts, about our life, about the purpose of creation, about why does certain things happen this way. जो कुछ आज इन्वेंशंस हैं, जो कुछ आज हमारे पास सहूलतें हैं, be it electricity or computers or internet, it is because somebody sometime sat down and thought. किसी ने बैठ के critical thinking करी जिससे हमारे पास आज हम इस advancement में आए हैं. और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर we will stop growing, we will stop progressing. So that is why we need it. Again, another concept is कि
basically कुरान ही से अगर सवाल करा जाए कि why were we created, what is the point of all of this is too much, you know, especially it's so difficult, इतनी पढ़ाई एक छोटी सी उम्र में हमें करनी पड़ती है, and then you have to figure out, और फिर I have studied for 22 years of my life now, कोई मैं कभी कभी I get tired of it and I ask, you know, कि मैं क्या कर रही हूँ, what am I doing? You know, I'm doing a degree after a degree. I'm spending so many hours in a day reading and writing and researching. What is this? But if you think, and if you go ask this question to your creator, who answers you in the Quran, he says the purpose of your creation was ibadat. And ibadat is a concept which जो हम लोगों को बहुत ही मतलब I would say a watered down version, not a गलत version but a partial version मिला. जब हम सोचते हैं इबादत तो हम सोचते हैं नमाज, और हम सोचते हैं एहतिकाफ मस्जिद में बैठ के, और हम सोचते हैं कि लंबी लंबी दुआएं, you know, like जो घंटों चले, और अमल उम्मे दाऊद, और पूरे पूरे मतलब आधा आधा कुरान पढ़ना एक रात में बैठ के. That is what we think of ibadat. But if you really look at how do our prophets and how do our IMAM define ibadat, it's a very simple concept. It's not a big concept. It is a very practical single concept. Hamari Islam is a practical religion, and I keep repeating it. I keep talking about it with my colleagues here. कि ये एक ऐसा दीन है जो बहुत easily, it makes life easy for you. I'll give you मतलब एक इसके लिए I'll give you a common sensical understanding. आपकी माँ आपको चाहती है ना? हमें मेरी माँ बहुत चाहती है, मुझे मेरी माँ बहुत चाहती है. अब अगर मैं किसी चीज की तलाश कर रहा हूँ, मैं कोई चीज ढूंढ रही हूँ, और मैं अपनी मम्मा से कहूँ कि मम्मा मुझे बता दे कहाँ रखी है, तो आप मुझे बताएं कि मम्मा मुझे इजी रास्ता बताएंगी कि कॉम्प्लिकेटेड रास्ता बताएंगी? Will my mom tell me कि आप पहाड़ पे जाओ और वहां से वहां जाओ, और फिर अब क्या कहते हैं एक महीने के रोजे रखो एक्स्ट्रा बिल्कुल, और उसके बाद तुम्हें जाके, she will not. She will tell me the right रास्ता कि इसमें मशक्कत है, you'll have to go, you'll have to do this, you'll have to go to this fana place to search for this thing that you are looking for, and you will get it. But she will tell me the shortest and the most convenient route. तो अल्लाह कह रहा है कि you know, to reach your maximum potential, to reach the potential for which you were created, it is ibadat. Just do ibadat. अब हम समझने की कोशिश करें कि इबादत क्या? It's the easiest route. It's not a complicated route. It's the easiest route to getting to success of all types, not just end of the world success, but success in our creation, success, satisfaction, success in understanding ourselves, success in this world, in the terms of this world also. So iske liye I'll give you a small waqia from Prophet Muhammad's time, and we'll see how Prophet Muhammad defines ibadat. So there was a time when Prophet was visiting a new city of Islam, and he saw that जब वो मस्जिद गए, वहाँ की लोकल बड़ी मस्जिद थी, उसमें कुछ लोगों ने उनसे एक आदमी को इंट्रोड्यूस कराया और कहा, या रसूल अल्लाह, ये आदमी जो है ये यहाँ का सबसे ज्यादा इबादत गुजार आदमी है, ये जो है ये पूरी रात नमाजें पढ़ता है, और इसको ये 1-2 दिन में कुरान खत्म करता है, और ये बहुत इबादत गुजार आदमी है, ये पूरे टाइम यही मस्जिद में रहता है. तो रसूल खुदा ने उसको देखा और कहा कि तो इसके घर वालों का और इसके खाने पीने का और सस्टेनेंस का इंतजाम कौन करता है? Who takes care of him? You know, अगर ये ऐसे यहाँ पूरे दिन बैठा रहता है, तो who takes care of him? तो लोगों ने कहा कि इसका एक छोटा भाई है जो इसकी फैमिली को और इसको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, और इन लोगों के मतलब उमूर को देखता है, इन लोगों के अफेयर्स को देखता है. तो रसूल खुदा ने मुस्कुराया और कहा कि बाखुदा, by God, his brother is closer to Allah than he is. इसका जो भाई है वो ज्यादा बड़ा इबादत गुजार है इसके कंपैरिजन में. Because God loves those, अल्लाह उनको पसंद करता है जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मशक्कत करते हैं. Those who make an effort towards living their life. और जो इंसान सोसाइटी पर बोझ हो जाए, जो इंसान सोसाइटी पर एक बोझ हो जाए, उस तक अल्लाह की रहमत नहीं पहुंचती. और ये कौन बोल रहा है? ये हमारे रहमतुल आलमीन बोल रहे हैं,
So it is a very scary thought अगर सोचा जाए तो। वो कह रहे हैं कि वहां रहमत नहीं आएगी, जो इंसान उस इंसान के ऊपर रहमत नहीं आएगी जो इंसान सोसाइटी पर एक बोझ बन जाए। चल बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wajil. So रसूल खुदा से समझ में आया कि इबादत की डेफिनेशन इज ब्रॉडर, इज मच ब्रॉडर। और ऐसी बहुत हदीसें हैं, बहुत ऐसे अगर आप रिसर्च करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इबादत कॉन्स्टिट्यूट्स। मेरा जो खुलासा है जितना मैंने इस बारे में सोचा और पढ़ा है वो दो चीजें। इबादत हैज टू एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट कि जो आपकी वाजिबात हैं, जो अल्लाह ने आप पर वाजिब किया है उसको आप फुलफिल करें, दैट इज वन पार्ट ऑफ इबादत। और सेकंड इबादत ये है कि जो चीज आप पर उस टाइम उस अप्रोप्रिएट टाइम के टाइम में दूसरों की राइट्स हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ऑब्लिगेशंस हैं और वक्त की ऑब्लिगेशंस हैं, आप उनको पूरी करें। सो टू सिंपली स्टेट, Ibadat is fulfilling your obligations to Allah and your obligations to your fellow creation in a timely manner. Bas, that is Ibadat. So, this is a very simple and a very simplistic and simplified analysis of कि हमारी purpose of creation क्या है. It's a very big philosophical debate. और अक्सर when I was young also I did not like philosophy. मुझे पसंद नहीं था philosophical debates में जाना और इतनी उसकी high order उसकी बात करना. तो I liked simple consumable things. तो for this point अगर आप इसको ही लेके चलें तो we're good, we can move on. So let's now let's step back and be like, okay, give me a plan. All of this is very high level. Sabika, all of what you're saying is very good, but it's very high level. बहुत broad है ये. इसको मैं practically अपनी जिंदगी में किस तरह से inculcate करूँ, किस तरह से incorporate करूँ. तो उसके लिए there are 4 main steps that I have identified to include critical thinking and education in your life. The first one being identify your potential. The second one being create a plan. The third one is clarify your intentions. अपनी नियत को समझो कि क्या नियत है. And finally, leverage your success. When you start getting success, उसको किस तरह से हमें leverage करना है. So the first sort of step in incorporating education, knowledge, wisdom in your life is identify your potential. इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको self aware होना है, अपना evaluation करना है. आजकल I see there's a new trend among parents taking their kids for career counselings and for aptitude tests. This is the form. ये आपकी इबादत चल रही है इस time. This is your time to figure out. अगर आप जवान हैं, आप स्कूल में हैं, आप बच्चे हैं, this is your time to figure out कि आप किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में अच्छे नहीं हैं. आपकी strengths कहाँ पर हैं, आपकी opportunities क्या हैं, आपकी limitations क्या हैं. All of us come from certain backgrounds. हर इंसान नहीं जा सकता fancy university पढ़ने. It's costly. तो what are your options? उस option में से आप कौन सा best रास्ता choose कर सकते हैं? Because Allah wants us to work with what we have. जो resources हमारे पास हैं, उसमें से अल्लाह चाहता है कि हम उन resources में रह के अपने आप को best तरह से अपना best potential achieve करें. तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर बैठ के अपने सवाल करना है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है. मुझसे when I'm working, when I'm studying, कौन सी ऐसी चीजें जो मुझसे आसानी से होती है और अच्छी होती है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मुझसे ज़्यादा अच्छे नहीं होते. All of these things are things that we have to think about. And I'm not talking about thinking about this when you reach college. No. Think about it at every single new year of your education. Sixth grade में आके सोचो इस बात को. Think about it. कि what do you like? What do you not like? Your likes and your dislikes will change over time. So you have to keep thinking about your strengths and your weaknesses. The second point is, be aware about the global trends. तो अगर आपको कोई चीज, let's say कि for example मुझे pottery पसंद है,
for instance, like I'm good at arts or craft. To know the global trends, have a sense of कि अच्छा इसकी value क्या है? Can I use this knowledge, this skill to earn a living? Can I use this to become somebody in this life who has a job, who can run a family, who can support others, who can help others? So know the trends कि कौन सी चीजें पॉपुलर हैं, कौन सी नहीं हैं, और कहाँ गैप्स हैं. I often give इस उसमें जब बात होती है तो I often give the example of a community, of the Jewish community. तो जो Jews थे at one point in the mid 1990s, there was a lot of persecution going on for them. उनको मारा जा रहा था, उनको ostracized society से निकाला जा रहा था. तो and today if you look at them, they are in the 1%. Most of them are in the 1%. तो उन लोगों ने जो bounce back किया एक ऐसे टाइम से जब उन लोगों को hunt करा जा रहा था, they were being hunted. Holocaust, if you read the history of Holocaust, you will see कि उनको collective करके मारा जा रहा था. But because they were so aware of opportunities and gaps, उनको पता था कि क्या करना है और एक साथ हमें as a community होके काम करना है, they were able to come out of it and come out of it so much stronger that they control the world now. So I always give an example. We should learn from every community. It doesn't matter what they are, who they are. We should pick their strengths and understand what and how they have leveraged their opportunities in life. So know the global trends, identify the gaps. Agar India में Musliman female photographers की कमी है, तो that's a professional opportunity. You have Muslim women as photographers, or Muslim business women. There are few of them. So those are opportunities for you. Think of a business idea. Think of something that you can monetize and that you can grow with. So know the trends. And third point in identifying your potential is talk to people who do this. Seek, like starting from your young age, अगर आपको कोई profession attract करता है, अगर आपको कोई course attract करता है, तो आप उसके अपनी community में देखें कि कौन है जो who has that job. कौन है? Talk to them कि आपकी job कैसी है, आपको अच्छा लग रहा है, आप ask them what are the challenges that they face, what are the benefits of being in their field. So make an informed decision about what your potential is. And this is critical thinking, जो हम ये analyze कर रहे हैं कि किस तरह से ये steps जो हम सोच रहे हैं, ये critical और high order thinking का एक practical application है. This is how you implement it. Okay? The second step is create a plan. मौला अली ने उनकी एक हदीस नकल है गुरारुल हिक्म में, and he says सबसे ज्यादा वाज़े साइन इंटेलिजेंस का और मतलब विजडम का गुड प्लानिंग है. जब हम कोई भी चीज करते हैं, अगर कोई हमारी बर्थडे पार्टी हमें थ्रो करनी है तो हम उसको कितना प्लान करते हैं, इनको गेस्ट को बुलाएंगे, ये खाना करेंगे और इस टाइम पे करेंगे और संडे होना चाहिए. We do all of that, right? We plan. So how can we take our lives not seriously enough to plan for it? किस तरह से हम अपनी जिंदगी बस एक क्लास से दूसरे क्लास से यूनिवर्सिटी से शादी से फिर बच्चे, मतलब without any planning, without any thought of where we are heading. तो मौला अली कह रहे हैं कि anybody who plans is actually a sign. It is a sign of good intelligence, of abundant intelligence in your life. So how do you create a plan? Planning के लिए you have three different things that you can do to plan well. First, there's always a long-term goal and there's always a short-term goal, depending on where you are in life. अगर आप 15 years old हैं, तो आप plan ये नहीं करके बैठ सकते बस कि मैं डॉक्टर बनूंगी. That cannot be a good plan of yours. That's not a good plan. That is your long-term goal. You want to enter medicine, or you want to do something in medicine. That's a long-term goal. Your short-term goal should be कि मैं इस time अगर 15 years old हूँ, मैं 9th grade में हूँ या 10th grade में हूँ, तो I'm going to take this time. इस time पे मैं अपने basics बिल्कुल clear करूँ. Algebra, biology, physics, इन सब के जो basic concepts होते हैं वो अभी शुरू होंगे, and then I will take this time to clear them completely. ताकि मुझे आगे चल के अगर मेडिसिन चूज करनी हो
तो मेरे पास एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो. Okay, so that is you identify a long-term goal, and second thing you do is you see different steps to get to that long-term goal. कैसे आप उस long-term goal तक पहुंचेंगे, एक एक स्टेप आप आउटलाइन करें अपनी जिंदगी में, सोचें जो भी आपका गोल है, यू नो, नाउ नॉन ट्रेडिशनल, अपनी स्ट्रेंथ्स के, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करें ताकि आप उसमें इंटरेस्टेड भी रहें, आप उसमें सक्सेसफुल भी रहें. ओके, आउटलाइन योर स्टेप्स. और यहाँ पे थिंक अबाउट इट कि होता क्या है, लड़कियां हो जाती हैं 15-16 इयर्स की, रिश्ते आने लगते हैं सोसाइटी में. That is not the time. That is not the time for you to worry about कि मेरी शक्ल कैसी है और मैं दिखती कैसी हूँ और मेरी शादी कैसे होगी. That is not the, there is a time for it. वो टाइम आएगा जब आपको अपने स्पाउस का, अपने हस्बैंड का सिलेक्शन करना होगा. But that time comes when, you know, you sort of have moved out from that age. So you getting distracted by things out of order is what confuses us. वो हमें कंफ्यूज करता है. सबसे पहले स्टेप्स में सबसे पहले हमें अपने आप को बिल्ड करने पे फोकस करना है. We have to make ourselves those people who can be individuals in society, who can contribute to society. हमारा रोल नहीं है कि हम घर बैठ के और वेट करें, यू नो, कि मियाँ आके हमें खाना खिलाएं और हमारे लिए हमें प्रोवाइड करें. नहीं, we are एक इंसानियत का तकाजा है, you know, it's a matter of human dignity to have a role for yourself. चाहे वो जैसा भी रोल हो, जो भी रोल, जो भी आपको सही लगता हो. I'll give you an example. I know a very esteemed calligrapher, a female calligrapher, Salwa Rasool, who uses her art, her paintings, and her calligraphy to spread a message. You know, to spread a message of awareness, a message about Islam, the message about the Arabic language, and a message about unity amongst different faiths. And she does this while observing Islam completely. So aapko, matlab, you have different avenues. You know, you can be a painter and do like her. You can be a painter like her and still be successful and be delivering a role. She has an important role to play in this world. So you don't always have to be, you know, a doctor or an engineer. Those professions are good. Those professions are service professions. Look at them, but also explore other things. And Abhi, I work for the Ministry of Gender yahan pe, and one of my important roles is researching women's empowerment in the world. So usme we had a seminar jisme there was a very important thing I took away from that seminar was one of the biggest hurdles, एक सबसे बड़ी रुकावट औरतों के empowerment में है कि औरतें अपनी love life को center बना देती हैं अपनी जिंदगी का. They base their life around one person, and that stops them from achieving their own potential, their own path. And this was a global expert talking about it, you know. So I realized that is true. हम लोग ठीक है, हम रिश्तों को करा देते हैं, हमारे societies में रिश्ते आने लगे लड़कियों के, and now everybody wants us to look a certain way and to start learning how to cook. All of that is important, but that's not the time. When you're in school, when you're undecided, जब तक आपका एक career pathway clear नहीं हुआ, तब तक that is not the time. The time will come. और उसी तरह से when you are in a stage where you should think about शादी, तब खाली करियर पे फोकस करने से भी नुकसान. So there's a time for everything. Once you build yourself, it is time for you to move on and build a family. You know, it has to be step by step process होना चाहिए. And it cannot be something कि जो आप किसी भी एक चीज पे अटक जाएं. You know, because that is what the world wants from us, to keep us out of productivity and out of productive phases. And finally, the third point is give your best. क्योंकि हमारे हाथ में जितना है, जितने resources हैं, हम उतना ही कर सकते हैं. नतीजा अल्लाह के हाथ में. And I can tell you from my personal experience कि जब भी आप मेहनत करेंगे, I can guarantee this. अगर आपकी मेहनत, your niyat is right and your मेहनत is sincere, वो आपकी रायगा नहीं जाएगी.
It doesn't, your goals might not always pan out. जो आप plan करके जाते हैं वो, मुझे lawyer बनना था for instance, it does not always work, but wherever you end up with your mehnat, you are supposed to be there. Allah wants you to be there. And I'm telling you, I'm going to give some pressure on you also. You are the followers of Imam Hussein. You are the followers of Imam Ali. He was the best at whatever he did, you know. Imam Ali was Mazharul Ajaib. He was the best, and there is no, मतलब हमारे पास कोई excuse नहीं है कि हम best ना हो. Oh, I want all of us Shia kids to be the toppers of wherever we are. जिस university में gold medal लो उस university, जिस college में हो उस college में first आओ. I'm putting this pressure on you because we are the followers. Look at who our leaders are. कौन हमारे leaders कौन है, हमें inspire कौन करते हैं, you know. We follow the best of women, Bibi Fatima. We follow the best of men, Maula Ali. So of course we are going to be best, no matter what you do. And we have lost sight of this fact. हमने ये हम भूल चुके हैं, इसीलिए हमारा खराबा लगा है, इसीलिए हमें oppress करा जा रहा है, इसीलिए हमें परेशान, क्योंकि we have forgotten कि हमारे अंदर का potential क्या है और हमें क्या करना चाहिए, हमें कितना dedicated होना चाहिए. So I urge you all to take your life like an important project for yourself. Okay? The third thing, koi bhi mehnat without the right niyat is useless. अगर आप कोई एक काम करते रहें और आपको पता ना हो कि आप किस लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो आपको benefit नहीं करने वाला. You know, you have to be clear. तो intentions जो नियत है वो हमारी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि we are using this effort first to build, to understand, to recognize ourselves. क्योंकि बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो मर जाते हैं बगैर ये समझे हुए कि वो क्या हैं, you know, उनकी strengths क्या हैं, उनकी interests क्या हैं, उनको नहीं पता होता, उनको उतना टाइम ही नहीं मिला कभी कि जो वो अपने आप को explore करे. दूसरी चीज, without service to humanity, कोई भी काम ऐसा, अगर आप कोई भी जॉब आप कर रहे हो उसमें एक एंगल होना चाहिए कि इट शुड मेक somebody else's life better. जो भी आप कर रहे हो, whatever you are doing, it should serve the world, the people in some way. हमारी सबकी responsibility है कि we should leave this world better than we got it. भलाई वो एक छोटा सा, in one small way, you know, you make a small difference, you make a difference for one or two people in your life, but that should be a goal of your life. सिर्फ और सिर्फ पैसे पे या मॉनेटरी सक्सेस पे कि मैं इसलिए इतनी पढ़ाई कर रही हूँ कि मैं आईआईटी दिल्ली में निकल जाऊं और फिर आईआईटी दिल्ली का 1 करोड़ का पैकेज होता है, प्लेसमेंट पैकेज, मैं वो चाहती हूँ. ठीक है, ओके, दैट्स नॉट अ बैड गोल, दैट्स अ वेरी एम्बिशियस गोल एंड यू शुड, बट उस 1 करोड़ का आप क्या करेंगे? डू यू वांट टू बाय अ न्यू कार विद इट, or a new house with it, or do you want to open a social enterprise with it? You know, do you want to help those kids who are struggling with paying their educational fees with your 1 crore? If that is your goal, I say jazakallah and nasru minallah fatahun kharib, Allah tumhare saath, if you go for it. But what is your goal? Your goal ultimately should have an angle, an aspect of service to humanity. And finally, because we're all created by somebody, you know, our final and our topmost goal should be that we please and we come close to that creator through all of this. And that's all he wants from us. You know, he doesn't want anything out of this world, impractical business. Nahin. अपने वाजिबात पूरे करो और अपने आप को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट शॉट दो इस जिंदगी का, और फिर देखो, you will be close to your God. You will be communicating with your God every day. और फाइनली अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हमने सबने अपना प्लान बना लिया और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया. अब हम इस प्लान्स को, जो भी छोटे माइक्रो प्लान्स, यू नो, लाइक फॉर योर टाइम, अब जो प्लान सक्सेस हो रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या करना है? हमें उस सक्सेस को लेवरेज करना है. Why do I say be the best in your field? इसलिए नहीं कि आप तकब्बुर में आ जाएं, you know, इसलिए नहीं कि be the best and then make the most money. इसलिए कि then you can be an ambassador to Islam. Because then people will look at you and remember that this is how a Muslim is. You know, and that's one reason. Second reason is
our imam is not with us right now. He's in ghaibat, but he's not here present. So it is our responsibility. We are his representative. अगर इमाम यहाँ पर होते तो वो क्या कर रहे होते? वो उन लोगों की जो इस टाइम भूखे हैं उनको खाना खिला रहे होते, जो इस टाइम परेशान है उनकी मदद कर रहे होते. So we are that people. Our imam will come and ask us, you used to believe in me, Allah Jal ya imam, Allah Jal ya imam, used to ask for me. Why weren't you helping me get there? So we have to leverage our success in this way. और जब मैं एम्बेसडर टू ऑफ इस्लाम बोलती हूँ तो ये बात नहीं है कि आप बहुत बड़े कोई मतलब बिजनेसमैन हो जाए तभी आप मुस्लिम, नहीं. इन योर क्लासरूम, अगर आपका एक छोटा सा क्लासरूम है और उसमें आप देख रहे हैं कि कोई इंसान बुली कर रहा है किसी इंसान को, तो एज अ मुस्लिम, because you represent Islam, you should go and stop that. You should stop somebody from getting bullied. You should be known for telling the truth. I'll give you an example. और मुझे when I was working in Delhi, आज से कई साल पहले, I was working with one of India's ambassadors, one of India's civil service officers, and he asked me one day, "Okay, Sabika, are you a Shia Muslim?" And I was like, "Yes, I am." And I have no idea how he figured out. And he said that, there is something about I have worked with a Shia Muslim before, and I am incredibly impressed by your integrity, by how creative and honorable you guys are. So whoever, I don't know who he worked with, मुझे नहीं पता कि किसके साथ उन्होंने काम किया, लेकिन जिसके साथ भी उन्होंने काम किया, उस इंसान ने हक अदा किया इस बात का कि वो शिया मुसलमान कहलाए. And that is our role at every stage. आपके neighbors को पता होना चाहिए कि ये मुसलमान लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये मदद करते हैं. So that is that, because you're an ambassador of your deen. And then finally, you need to leverage this success to please Allah. Do small things for him, just for his sake. Not for recognition, not for anything, just for Allah. Help somebody out without anonymously, without putting yourself out there. So leverage your success. If you get money, inshallah, Allah will give you wealth. Use that wealth to get closer to him. Use that time. If you can write well, write for him. If you can paint well, paint for him. So do something to just get closer to him with whatever you are good at. And finally, the biggest litmus test of whether or not you have become educated and successful is one measure. रसूल खुदा से पूछा गया कि एक knowledgeable इंसान की निशानी क्या है, तो रसूल खुदा ने कहा बेहतरीन अखलाक. So when you become successful, when you become when you grow and you become successful, अगर आपके अंदर arrogance आ गया, अगर आपके अंदर बदतमीजी आ गई, तो फिर आप successful और educated नहीं हैं. Unless and until you are polite and humble and you have the best of mannerisms in a crowd, that is when you can truly say that you have achieved your goal of success. So that is your final test. जब आप अपने आप को evaluate करें कि क्या मैं ठीक है, मैं first तो आ गई अपने क्लास में इस semester में, तो क्या मेरे अंदर मतलब am I now being a rude person or have I become a nicer person with this success? And when you realize that you've become a nicer person and you've gained success, that is when truly you have been educated. Salawat padhe Muhammad wa ali Muhammad par. And now I want to leave this floor for questions. Agar aapke paas koi bhi sawal ho isse related, so please feel free to ask me now. You can also email me at this email address here. Have I stopped sharing the screen or is it still sharing? It's stopped now, right? Can you hear me? ऐसा तो नहीं हुआ कि Yes, मैंने we पिछले can. 45 मिनट 30 मिनट जो है वो खुद ही से बात करिए अकेले घर में. Is someone there?
We all are there, Sabika. We all are Acha, there. acha. Okay, okay, And great. very, very So motivational speech. And I'm sure all the children, they must have gained a lot of knowledge from you. And we should continue this. I am really looking forward कि एक उसमें तुम justice नहीं कर सकती Sabika. You have to come many times to do the justice. inshallah, inshallah. I try, and I'm really bad at time management, which is what I'm working on as a short-term goal now with my life. And I want to help. So in any way that I can, क्योंकि मैं ये बात सोच रही थी आज ही जब मैं ये बना रही थी कि often when I was a kid also, I used to attend the best of lectures in Sharjah from the best of alims who would come and speak to us, but very few of them talked about women having ambition and women having goals. कोई बहुत ही कम लोग थे ऐसे, and we don't know of many people in this world who sort of talk about that. So I'm doing more work on it to figure out कि exactly Islam और हमारे रसूल की अहदीस और हमारे इमामों की जिंदगी उसके लिए क्या करती है. How do we support women empowerment through our Islamic concept of not just more than just being a wife and a mother, because that is important, those roles are important, but there is more to a woman. So I'm working on those, and I wish to finish them in some time and share them with our girls, because I missed out when I was a young student and I didn't have that kind of access. And I hope that we are able to get more people talking about this, more women who are career women, who have balanced so well. My mother is an example. She worked all her life and she raised us with all obligations of Islamic obligations of a mother. But nobody talks about that. Nobody talks about women having goals and careers and having a drive and running something beyond, bigger than their houses, because it's sort of seen as, I don't know, threatening, or it's sort of seen as socially wrong. But I have examples in my life who I've seen done that, but nobody talks about it. So I would love for us to have this conversation more, because I know that our girls need it. This is something which we need actively. So reach out to me, stay connected, share your experiences with me. I am also a researcher, a student. I'm learning constantly. So I would love to learn from your experiences as well about this. Or I completely forgot to mention, but when I was preparing for this, I came across this book by an Ayatollah, Jafar Subhani, and I've shared the link of it. It's called Secret to Success. He's done a brilliant job in explaining how, and it's a very short book. It's 60 pages, so aapko shayad it'll take you a few hours to read it. So he's done a really good job and a very engaging job at explaining how you should pick your potential, how you should identify your potential and your strength, and what is the key to success in whatever you choose in life. And this is not religious. He's talking about career. He's talking about your professional life. So how do you professionally decide what to do? And all of this, trust me, is ibadah, the best of ibadah. Because this is what you're supposed to do. You're supposed to think beyond कि मैं शादी में अपने pink color का गरारा पहनूंगी. Beyond that, beyond that. Let's step beyond that, because we have the caliber, we have the examples. And our majalises, our lectures are designed in a way to make us think, to make us force कि ये जिंदगी temporary, it is going to go away. We need to leave a lasting impact here and make sure that that impact transfers in our next life. So मैंने इसका link share करा है, and I should have put this in my presentation also, लेकिन I'm just going through a lot of things together. So I've forgotten that, but please read this book. It's a very small book. It's available on alislam.org. It's called Secret of Success. It's by Ayatollah Jafar Subhani. And the link is in the chat. So if you scroll, that's my first message, I think, in the chat. So you have the link that you can download. Jazakallah, Sabika, Jazakallah. Thanks a lot. And very nice lecture, माशाल्लाह. But one request, बच्चों के लिए भी आपको कुछ अब करना होगा. बच्चे बेचारे बैठे रहे, वो छोटे बच्चे जिन्होंने पढ़ा था बहुत अच्छा, तो because उनके लिए भी अब next time इंशाल्लाह अलीना से बात this must have been a little मुझे लग रहा था कि और ज़्यादा
teenagers होंगे, so बच्चे maybe I सब went बच्चों wrong ने in that बहुत अच्छा पढ़ा demographic. माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। So let us end then our discussion with a dua, and let's use a dua that Imam Ali has prescribed us and taught us. And इस दुआ से भी lessons सीखने को मिलते हैं, पता है? This, if you listen to this dua, if you try to understand what this dua is, you see he's taught us how to ask for dua and how to include everybody in your dua. He's not said Musalman, he's not said only Shia, you know, he said everyone. So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أثقل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم اشف كل جاع، اللهم اقس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. So this dua is known as the dua of Haja, and it's available in Wazaif al-Abrar and other books that we have normally in our house. और इसमें Imam has addressed the problems of all categories. इसमें शिफा की भी दुआ है, इसमें जो मर गए अहल क़ुबूर सुरूर जो क़ब्रों में हैं उनके सुकून के लिए दुआ है, because they are the ones who need our most prayers. तो अल्लाह हमारे मरहुमीन को अपनी जवाल रहमत में रखे, हमारे मरीजों को शिफा अता करे, हमारे जवानों को हिम्मत दे कि इस ज़माने में, ज़माना डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, मुझे पता है। जब मैं छोटी थी तो डिस्ट्रैक्शंस थे, लेकिन आज के डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग हैं, बहुत क्वांटिटी में आ गए हैं। तो आई नो दैट every हुसैनी is fighting a battle today for keeping their faith, for keeping their focus in the right place. तो may Allah help those people in maintaining that focus. और हमारे तमाम जो सिचुएशन ख़राब हो गई है, ये वबा आ गई है, अल्लाह इससे हमें महफूज करे, और जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर करे, और हमारी इस खलील से इबादत को कबूल करे, because this is an इबादत nonetheless. तो मैं आप लोग आमीन कहिए, और इंशाल्लाह we will be in touch. माशाल्लाह सभी का एक्सीलेंट स्पीच, माशाल्लाह से। I would like to call Asha and सलाम है ना जी? आवाज आ रही है जी? सबको सलाम। या अली सलाम अलैका, या वली सलाम अलैका, या वसी सलाम अलैका, सलवात। वंडरफुल सलाम, जज़ाकल्लाह। मैं सभी मेहमानों को शुक्रिया अता करती हूँ कि वो इस अहम प्रोग्राम में शामिल हुए। आज हम अल्लाह को जितना शुक्र अता करें उतना कम है। आज कायनात को वो नेमत अता हुई है इस दुआ के साथ कि खुदा हमें ये तौफीक दें कि हम मौला अली की सच्चाई और हकीकी मोहब्बत को हासिल करें और उनके बताए रास्ते पर अमल करें। I would like to thank Sabika Zehra Sahiba for taking out her precious time and enlightening us with her words of wisdom, and all the kids who presented in the name of Maula Ali. Thank you.